Good morning, dear students. Today we are going to begin chapter number 2, what is democracy and why democracy. As you know, the government which we enjoy in our country is a democratic government. A democratic kind of government is a government in which we have the right to vote, to choose our representative, simply. But there are some broader definitions, and the way we think is quite different the way our leaders think while joining the democratic kind of government. Why they have provided a kind of government which is democratic, right? By at that period of time, there were different governments in the different countries also. So let us try to understand that. Overview. First of all, the stories and analysis of this chapter, of the previous chapter, gave us a sense of what democracy is like. They will describe some governments as democratic and some non-democratic government. We saw how governments in some of those countries change from one form to another. Let us now draw general lessons from those stories and ask some more basic questions. What is democracy? हमने पहले कुछ पढ़ चुका है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से होती है, कौन कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. तो उसके बेसिस पे वी हैव ड्रॉन अ काइंड ऑफ फिगर्स कि किस तरीके की गवर्नमेंट होती है. लेकिन अब हम ज़्यादा ब्रॉडर वे में समझेंगे कि आखिर क्या है डेमोक्रेसी, किस टाइप की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी और क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके. दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन. एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके डेफिनेशंस क्या 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 मतलब क्या है. द एम हियर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली दी बेयर एंड मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेसी में कौन कौन से मिनिमम फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो पढ़ेंगे. Right, after going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic form of government. इस चैप्टर को हम पढ़ने के बाद इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन सी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, कौन सी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. इस चैप्टर के बाद हम ब्रॉडर आइडिया समझ पाएंगे डेमोक्रेसी का कि क्यों उसको लागू किया गया. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रीवियस चैप्टर्स का मतलब होता है प्रीवियस क्लासेस में आपने हो सकता है पढ़ा हो कि डेमोक्रेसी क्यों इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, व्हाट मेक्स इट बेटर देन दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्यों इसको बाकी गवर्नमेंट फॉर्म से बेटर कहा जाता है. दिस इज़ द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्यूज मी, yes class, in chapter 1 we read many stories from different parts of the world. Through these stories we discussed various government and organization. We called some of these democracies, other were described as non-democracy. Can you recall from each of these countries something about the governments that we can describe as democracies? Chile before and after Pinochet's rule. Chile Pinochet के रूल से पहले, उसके बाद में. पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट. पोलैंड जब उसमें कम्युनिस्ट का फॉल हो गया तब क्या हुआ. घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ कुमराहा गवर्नमेंट. व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम? व्हाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज इट? क्या क्या चीज़ें हम उनको क्लब करते हैं एक सिंगल डेमोक्रेसी, राइट? डिस्टिंग्विशेस देम गवर्नमेंट फ्रॉम पिनोशेस रूल इन चिले, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, ऑन द लादर इन घाना. व्हाट डू दीज गवर्नमेंट हैव इन कॉमन with the military rule in Myanmar? Why do we say that these governments are not democratic? म्यांमार की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक क्यों नहीं बोलेंगे? वहाँ पर जैसे मिलिट्री रूल है, प्रेजेंटली वहाँ पर मिलिट्री रूल है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज इट. वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर टुमारो. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. Okay, try to read the chapter and note down the important points. If your work is not complete, try to complete your work within 2 days so that we can proceed to the next chapter. Thank you very much for watching the video.